मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा सैनिकों की अनदेखी उसने पूरे देश को शर्मसार किया है। मोदी जी और उनकी सरकार को शर्म से अपना सर झुका लेना चाहिए। सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल जो बामला गांव भिवानी के रहने वाले थे, उन्होंने एक पत्र देश के रक्षा मंत्री को लिखा और उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें कही। सूबेदार साहब ने कहा कि उन्होंने 30 साल 9 महीने और 26 दिन इस देश की सेना और सेवा में नौकरी की है। इस देश की माटी को अपने माथे से लगाकर रखा और उसके बावजूद भी उन्हें ना 7वें वेतन आयोग का पूरा लाभ मिला और ना 1 रैंक 1 पेंशन मिल पा रही है। उन्होंने विशेष तौर से यह लिखा कि पेंशन की बढ़ी हुई बढ़ोतरी नहीं मिल रही है जो दूसरे लोगों को मिल रही है, और यह लिखकर आखिर में अपने हाथ से मार्मिक शब्द लिखे इस देश के सैनिकों की ओर से, और मैं वो केवल एक लाइन आपको पढ़कर बताऊंगा। उन्होंने लिखा, नोट, ये मेरे देश के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए और मेरे देश के वीर जवानों के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर रहा हूं। और यह कहकर दुर्भाग्य से उन्होंने आत्महत्या कर ली। सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल का परिवार, उनके 2 बेटे, एक दामाद और एक उनका बूढ़ा भाई, जब उनका पार्थिव शरीर लेने दर दर की ठोकरें खा रहा था और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आज सुबह गया, तो उस पार्थिव शरीर का पता तक बताने से मोदी जी की सरकार ने इनकार कर दिया। पार्किंग में एक पत्थर के ऊपर वो पूरा परिवार बैठा था। सूबेदार ग्रेवाल से व्यक्तिगत तौर से मिलने का और उनके घर जाने का सौभाग्य मुझे पिछले सालों में प्राप्त हुआ। उनके गांव में जाकर उनके परिवार के आंसू पोंछने हरियाणा की कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी और मैं, हम दोनों वहां पहुंचे, उनकी समस्या जानने, उनकी पीड़ा जानने और दुख की घड़ी में 2 सांत्वना के बोल बोलने। पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए, डिक्टेटरशिप और तानाशाही दिखाते हुए सभी मीडिया चैनल्स के कैमरामैन और पत्रकारों को उठाकर बाहर फेंक दिया। उन बच्चों की और उनके बूढ़े भाई की केवल एक मांग थी, हमारे पिता तो दुनिया से चले गए, देश के सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की दुहाई करते हुए हमें राहुल गांधी जी से मिलना है, क्योंकि हमें विश्वास है कि 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को राहुल गांधी जी पूरा करवाएंगे। जब राहुल गांधी जी तक हमने ये बात पहुंचाई तो उन्होंने फौरन निर्णय किया कि वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल आकर परिवार से मिलेंगे। जैसे ही श्री राहुल गांधी पहुंचे, परिवार के 6 आदमी और 2 लोग, हम मात्र 8 लोग थे। राहुल गांधी जी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंदर आने से इनकार कर दिया और पूरे राम मनोहर लोहिया अस्पताल को एक पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया। परिवार को जब यह पता चला तो वो एक अटैची में अपने पिता के तगमे, राष्ट्रपति अवार्ड्स और पूरी फाइल जो लेकर आए थे उसको लेकर चल पड़े राहुल गांधी जी को दिखाने के लिए। हम सब लोग गेट तक भी नहीं पहुंचे कि दिल्ली पुलिस ने बगैर किसी कारण के भद्दी से भद्दी गालियां जिनकी इस मन से चर्चा नहीं हो सकती, उस सैनिक के परिवार को दी मोदी जी के इशारे पर। मोदी जी की पुलिस ने सैनिक के उन दोनों बेटों को, जिनके बाप का अंतिम संस्कार वो कर नहीं पाए, उनको मारा, पीटा, घसीटा और फिर सबको उठाकर हिरासत में ले लिया। राहुल जी से मिलने नहीं दिया और हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में फेंक दिया। मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में जब राहुल गांधी जी पहुंचे तो वो नौजवान
उनकी केवल एक इच्छा थी कि हम अपने पिता का अंतिम पत्र राहुल जी को देना चाहेंगे। राहुल जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जब वो बच्चा राहुल गांधी जी तक जाने लगा, और ये वाकया मैंने भी देखा और अब उसके वीडियोज उपलब्ध हैं, उस बच्चे को मोदी जी की पुलिस ने हाथ से पकड़कर पुलिस स्टेशन की फर्श के ऊपर घसीटा। वो बच्चा हाथ जोड़ता रहा, वो बच्चा आंसू बहाता रहा, सैनिक का वो बेटा रोता रहा, पर मोदी सरकार की निर्दयी पुलिस ने एक ना सुनी और उनको गिरफ्तार करके अगुवा करके कहीं और ले गए। जब हम सबको पुलिस स्टेशन से 3 घंटे बाद छोड़ा गया तो पता चला कि वो सब जो हैं वो कैनॉट प्लेस में पुलिस स्टेशन पर उस परिवार को बंधक बनाकर मोदी जी और उनकी पुलिस ने रखा है। जब राहुल गांधी जी वहां गए, जब विपक्ष के नेता गुलाम नबी जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अजय माखन जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी और हम सब जहां वहां गए तो परिवार को मिलने देना तो दूर, उनके साथ सांत्वना व्यक्त करना तो दूर, उन सबको फिर जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोग इस समय मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में हैं और राहुल गांधी जी को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। यह है उस शहीद सैनिक के परिवार की कहानी और आंखों देखी जो बर्बरता पूर्वक व्यवहार मोदी सरकार ने किया है। हम केवल यह पूछना चाहते हैं, मोदी जी सत्ता में आने से पहले सैनिकों की कसम उठाकर जिस नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी में वायदा किया था कि मेरा प्रधानमंत्री बनने पर पहला निर्णय 1 रैंक 1 पेंशन को होगा, क्या आप उस शहीद सैनिक को, देश पर मर मिटने वाले उस सैनिक को ये फल दे रहे हैं उसकी आपको प्रधानमंत्री बनाने का? क्या सत्ता का अहंकार और सत्ता का नशा मोदी सरकार के सर चढ़ इतना बोल रहा है कि मोदी सरकार को सैनिकों की कुर्बानी और मरे हुए सैनिकों का परिवार अब राजनीति और ड्रामा दिखाई देने लगा है? मोदी सरकार के अनन्य भक्त जिनसे समय समय पर समाज के अलग अलग वर्गों का वो अपमान करवाते हैं, जनरल वीके सिंह ने तो मोदी जी प्रधानमंत्री जी के इशारे पर हद कर डाली जब उन्होंने उस मृत सैनिक जो उन्हीं के जिले से आता है, जब उसकी मृत सैनिक की गरिमा को भी अपने गंदे और तुच्छ शब्दों में धूमिल कर दिया। यह दर्शाता है मोदी सरकार की मानसिकता, उनका गरूर, सत्ता का उनका घमंड, उनका तानाशाही रवैया। प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी को जेल भेज दीजिए, कांग्रेस के सब नेताओं को जेल भेज दीजिए, हमारे साथ दुर्व्यवहार करिए, हमें कोई एतराज नहीं, पर इस देश के लाखों लाखों सैनिक जो आए दिन भारत माता के लिए जान की कुर्बानी देते हैं, जो जान पर खेलते हैं, जो आए दिन धरती माता की माटी लगाकर जाते हैं, उनके साथ तो न्याय करिए, उनको तो पूरा न्याय दीजिए। 1 रैंक 1 पेंशन आदरणीय एके एंटनी साहब जब रक्षा मंत्री थे तो कांग्रेस की सरकार ने दिया था। 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब है कि एक ही रैंक और एक ही समय जिसने सर्विस की है उनको बराबर की पेंशन दी जाए। और यह निर्णय हमने नहीं किया, यह निर्णय हमने कोश्यारी कमेटी से करवाया था, इस परिभाषा का निर्णय। और वो कोश्यारी जी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय एके एंटनी साहब ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसे स्वीकारा, उसे स्वीकार कर आदेश जारी किया। पर मोदी जी ने क्या किया? उस 1 रैंक 1 पेंशन को प्रधानमंत्री बनते ही 1 रैंक मेनी पेंशन दे कर दिया। 29 तारीख को सर्जिकल स्ट्राइक्स होता है, हमारे सैनिक जान पर खेलते हैं, और 30 तारीख को मोदी सरकार उसी सैनिक की डिसेबिलिटी पेंशन को आधे से कम कर देती है। सैनिक पदों पर रहने वाले हमारे अधिकारियों और हमारे कर्मियों, उनमें और सिविलियन कर्मियों में भेदभाव मोदी जी की सरकार करती है। तीनों सेना प्रमुख 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों के बारे में कहते हैं, मोदी सरकार उसको कूड़े के टोकरे के अंदर फेंक देती है। क्या यह है मोदी जी आपका न्याय इस देश के सैनिकों से?
सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल एक व्यक्ति नहीं थे, वो वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई के द्योतक थे, उसके चिन्ह थे। उन्होंने जान और कुर्बानी जो दी वो दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, परंतु उस व्यक्ति ने कुर्बानी दी इस देश के सैनिकों के लिए। उसके परिवार को गाली देकर, उसके परिवार को थाने में मोदी जी की पुलिस द्वारा घसीटकर, उसके परिवार को लात और घूसे मारकर, मोदी जी क्या आप इस देश के सैनिक का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? शहीदों का आज घोर अपमान हुआ है। आज हमारे शहीद सैनिकों की आत्मा जरूर कहीं ना कहीं करवटें बदल रही होगी और सोच रही होगी कि उस सत्तासीन अहंकारी को, जिसको प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाया था, गद्दी पर बैठने के बाद इतना क्रूर अन्याय शायद ही कभी 68 वर्ष में सैनिकों के परिवार के साथ हुआ होगा। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय A.K. एंटनी साहब से कि वो वन रैंक वन पेंशन और उसके फॉर्मूले के बारे में और आज की राजनीतिक हालात के बारे में आपसे अपनी बात कहेंगे। Thank you. We are all shocked and sad about what happened in the capital yesterday. The tragedy of committing suicide by an ex-serviceman for one rank, one pension is the main responsibility of the present government. They are responsible for this suicide. My sympathies are for the family of the deceased ex-serviceman. Modi government, including the Prime Minister and the Defence Minister, is telling for the last 1 year they have already implemented the one rank, one pension fully. But actually, most of the ex-servicemen are still awaiting to receive the one rank, one pension. Modi government, while implementing this one rank, one pension, they have diluted the one rank, one pension order issued by the UPA government. As my colleague said, now instead of one rank, one pension, it is one rank, 5 pensions. Today, our leader Rahul ji, when he went to the hospital to meet the members of the deceased soldier's family, that is a normal courtesy of Indian culture. He was prevented and he was illegally detained. More than many other leaders in the country, Rahul Gandhi can claim that even while outside the government, he also played a major role in implementing this one rank, one pension. During the UPA time, many a times Rahul Gandhi ji requested the Prime Minister, all of us, that we must implement the one rank, one pension as quickly as possible. So from the day one onwards, he was actively involved in the welfare of the ex-servicemen, not only for the one rank, one pension, for their welfares and all other activities. One rank, one pension scheme was implemented by the UPA too. In the budget of Sri P. Chidambaram, in February 17, 2014,
this scheme was announced. After that, our government issued order in which the main sentence was, it has been decided to implement the principle of one rank pension for all ranks of defense forces prospectively from the financial year 2014-15. So first time in the history of independent India, the announcement of the one rank one pension came in 2014 budget. After that, government issued the order. Later, government worked out the details. In the order, we clarified what is the meaning of one rank one pension. In short, I am not going to explain. We have clarified one rank one pension implies that uniform pension be paid to the armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of service, irrespective of the date of retirement, and any future enhancement in the rate of pension should be automatically passed on to the past pensioners. That was our decision. That was our order. So irrespective of the rate of retirement, yesterday or 10 years back, a soldier who served in the same rank for the same length of service, they will get the same pension. That was the order issued by the UPA government. This government diluted it. Our order was one rank, one pension. This government diluted, and now it is one rank, 5 pensions. And also in our order, we have clarified this principle also will include that family pensioners and disability pensioners also will be included in this scheme. That was the decision taken by the UPA government. So decision for the first time to implement the one rank one pension was announced by the UPA government in the budget of February 17. Then government issued the order, and also the order we have clarified what is the meaning of one rank pension, and also we said this principle will apply to family pensioners and disability pensioners. Then election came, our government changed. Modi ji came. During the election time, as he said, the announcement by the Prime Minister was, the moment we take over, one of the first decisions will be implementation of one rank one pension. That is not implemented. Then the ex-servicemen will have to, they were forced to have agitation in the gender months together, hunger strike, relay strike. Then only they agreed to implement it. But that also, instead of one rank one pension, one rank 5 pension. And the ex-servicemen continued the agitation, not only in Delhi, in Patna, in many other state capitals. Then the government said they will remove all these anomalies. For that they announced a one-man commission. That report is still with the government only. They are not implementing. That is why still the ex-servicemen all over the country, they are carrying on the strike. Hunger strike or token strike, whichever manner. So actually, the present government, instead of implementing the order issued by our government, they have diluted it. Still, ex-servicemen are on the one path. But the Prime Minister repeatedly, even from the rampart of that fort, he said, we have implemented the one rank one pension. Defense Minister always telling, we have fulfilled everything. This is totally false. If everything was implemented, this tragedy wouldn't have taken place.
vast majority of the ex-servicemen, they are still waiting for the one rank, one pension. That also is a diluted form. That is what happened today. Not only this issue, after the pay commission, lot of events are for the service people about their rank, there is complaint about the ranks, pension anomalies, all these things they have to find out. They are delaying it. That is, the entire ex-servicemen community and military people, they are restless. We are not politicizing it. During our time, only all these BJP leaders also were in the street. We are not the street. They were politicizing at that time, including the present Prime Minister. Almost all the BJP leaders were on the street at that time. They were politicizing. You were telling them, please implement the promise given to the ex-servicemen first by the UPA government and after that there. They are not implementing it. One rank, one pension, and also lot of anomalies after the pay commission that they have to find a solution at the earliest. Prime Minister onwards, everybody is always praising the heroism, sacrifice for our armed forces. In Pathankot, in Uri, and also continuous border problems. Every day, every week, soldiers are dying in the border. Prime Minister is paying glowing tribute to the heroism, sacrifice, patriotism of the armed forces. If they are true to their words, if they are true to the words about their praise about the armed forces, they must, without any delay, on war footing, find out solutions, remove all the anomalies, implement one rank, one pension in toto at the earliest, and also they must remove all the anomalies of the pay commission. This is our request. Otherwise, things will be more difficult. Difficult days are coming. I request the government, Prime Minister, at least after this, don't delay it. Implement the one rank, one pension, and also find a solution to the reasonable solution to the pay commission anomalies at the earliest. And today's incident, he said, Rahul, as I said earlier, last 3 years, whenever an occasion comes, during UPA 1, UPA 2, even now, his hearts are for the Indian armed forces. He is proud of the armed forces, their sacrifice. That is why he is always taking up the issue of armed forces in general, ex-servicemen in particular. Today he is going to build the hospital is not a new thing. He is continuously taking the issue of armed forces. On the previous day of the Diwali also, he wrote a letter to the Prime Minister. Please give to the armed forces their due as a Diwali gift. So he is always taking their cause. He is their well-wisher, their friend. When he was going to the hospital to meet the relatives, normally that is Indian culture. When this kind of incidents take place, we go to the hospitals. We go to the houses of deceased persons, condole their death and also console their relatives. That is natural. But he was detained. Many hours he was detained. He was not allowed to meet the relatives. Instead of that, what cruelty they are doing. The deceased ex-serviceman's son was not allowed to meet the deceased. The relatives were not allowed. This is unheard of in the Indian history. Unheard of. If they have any kind of loyalty or sympathy for the armed forces, my humble request to the Prime Minister and Defence Minister, please apologize the families. Apologize the nation for misleading them that they have already implemented the one rank, one pension. This is my request. Any questions? So why the BJP has to letting that Congress trying to play politics and trying to take political mileage out of the death of Sundar, Riva
When armed forces and soldiers cry for justice, 125 crore people of this country hear that cry of justice, cry for justice coming from their heart to Modi ji, it is politics. When soldiers lay down their lives and are forced to commit suicide on account of the pain and suffering heaped upon them by an arrogant Modi government, it is immeasurable pain felt by them, but it is politics for Modi government. When family of dead soldiers are dragged and beaten up on the streets by Modi ji's police, it may be drama for Modi ji, but it is the harsh reality of the pain and suffering of the family of the soldiers. When family of dead soldiers demanding justice not for their father, but for millions and millions of army men, they are illegally detained, kidnapped and arrested by Modi ji's police. It may be drama for them, but that is the harsh reality of the cruel, arrogant Modi government. I think it is time that Prime Minister Shri Narendra Modi introspected, came down from the high saddle that he is sitting upon, where he is unable to see the pain and suffering of the same armed forces in whose name he does politics, but when it comes to giving them justice, he treats them with great disrespect and insults their families. इस तरह से वीके सिंह साहब ने मानसिक हालात पर सवाल उठाया है, मानसिक स्थिति के बारे में सवाल उठाना और साथ साथ ये कहना कि राजनीति नहीं होनी चाहिए परिवारों की। क्या कांग्रेस उनके माफी की मांग करती है, उनके साथ उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करती है, लगातार इस तरह बयान देते रहते हैं? देश के सैनिकों से अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश के सैनिकों को झूठ बोलने के लिए, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। माननीय वीके सिंह जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर एक मोदी भक्त के तौर पर सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल और उनके परिवार का अपमान कर रहे थे। मोदी जी, आप और आपके मंत्री वीके सिंह कितना भी सैनिकों का अपमान करें, कितना भी अत्याचार करें, कितना भी उनको न्याय देने से इनकार करें, परंतु इस देश के 125 करोड़ लोग आपके इस अहंकारी और क्रूर व्यवहार को देख रहे हैं और इस देश के लोगों ने हमेशा अहंकारी शासक को सही सजा दी है और सही सबक सिखाया है। हमें विश्वास है कि मोदी जी न्याय करें या ना करें, जनरल वीके सिंह एक मरहूम सैनिक को गाली दें या न दें, जनरल वीके सिंह और मोदी जी की सरकार सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल का अपमान चाहे कितना भी कर ले, पर इस देश की जनता न्याय करेगी और उस न्याय की लड़ाई में श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस देश की जनता और इस देश के सैनिकों के साथ दृढ़ता से खड़ी रहेगी। Is it not the case that Delhi police behaves in this criminal way in all agitations at all times and whatever the government? When your government was in power, the police misbehaved during the Nirbhaya case against the protesters. Do you think it's not it's the police's way of doing it and nobody sets them right? You ask two very important questions and let me answer them one by one. One particular thing is, why are you calling it Modi's police when it is the Delhi police which behaves all the time like this? Last when I checked, Delhi police came under the Home Ministry and Modi ji. So that is the answer to your third question first. May I remind you, as also the entire country, that on 14th of August 2015, Modi government had similarly beaten up agitating OROP men on Jantar Mantar as a gift on Independence Day, showing its cruel and ugly face. Modi government has again done this to the family of Subedar Ramkishan Grewal in order to show to ex-army men
in order to show those who demand justice that the might of the stick and the bullet that Modi ji wields will supersede any cry for justice of our soldiers. If that was not so, then why would General V.K. Singh, who is the greatest Modi Bhakt and a union cabinet minister, dishonor the memory of a soldier who comes from the same district, questioning even his mental state of mind and insulting the entire ex-servicemen of this country? Why would Modi ji, as Prime Minister, lie to the nation, lie to our ex-servicemen? Modi ji wants to do politics of surgical strikes. He wants to garner votes based on the sacrifice made by our soldiers. But when it comes to giving them justice, Modi ji throws their demands into the dustbin. And that is the pain, the agony and the suffering that was reflected in the suicide of Subedar Ramkishan Grewal. I think Modi ji, as Antony Sahab rightfully said, should be ashamed, and so should this government be ashamed, and must unilaterally, and today itself, Prime Minister must apologize to the entire nation as also to our proud armed forces. इस वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, आप लोग बात कर रहे हैं, राहुल गांधी दूसरी बार डिटेन में, और कांग्रेस ज्यादातर जो लीडरशिप है वो दो अलग अलग थानों में उनको डिटेन करके रखा गया है, और जो प्राइवेट डिमांड है वो फैमिली से मिलने दिया जाए, वो अभी भी नहीं पूरा हुआ है। ये जो है ये कब तक चलेगा और क्या इसके आगे क्या स्ट्रेटेजी? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी को जब वो परिवार से मिलने गए मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन दिल्ली में, तो बगैर कारण बताए और बगैर किसी अपराध के गिरफ्तार कर लिया गया। हम सबको गिरफ्तार किया गया। उस शहीद के उस मरहूम सैनिक के परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब उन्होंने मांग की कि वो मिलना चाहते हैं राहुल जी से, तो उनको पुलिस स्टेशन के फर्श पर निर्दयता से घसीटा गया। एक बार फिर राहुल गांधी जी जब उस परिवार को, जिसे पुलिस अगवा करके कैनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन दिल्ली ले गई थी, जब मिलने गए तो पूरे कांग्रेस नेतृत्व को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। किस प्रकार का दमन चक्र है ये? मोदी जी, क्या आपका दिल नहीं दहलता? हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, आपका दिल पसीजता नहीं? आप इतने निर्दयी क्यों हो गए हैं? इस देश की मोदी सरकार इतनी निर्दयी और क्रूर क्यों हो गई कि उन्हें सैनिकों की पीड़ा सत्ता के अहंकार में नजर नहीं आती? ये सैनिकों का संघर्ष और उनकी मांगों और उनको न्याय दिलवाने का संघर्ष, जिसका बीड़ा राहुल गांधी जी ने उठाया है, हमें कितनी भी बार जेल जाना पड़े, राहुल जी को कितनी भी बार जेल जाना पड़े, सैनिकों को न्याय दिलाने का संघर्ष और राहुल गांधी जी का संकल्प लगातार जारी रहेगा। शुक्रिया।